क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में, तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में, तू मेरे ख्वाबों में जवाबों में सवालों में। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज मामा आपके साथ शेयर करेगी काबली पुलाव की रेसिपी। या काबली पुलाव नॉर्मली लैम में बनती है, लेकिन हमारे कुछ जानने वाले हैं वो चाहते थे कि चिकन में बने क्योंकि उनको लैम नहीं पसंद। So anyways guys, stay tuned for the Kabuli Pulao cinematics. अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। अच्छा, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि आपने अफ़गानी पुलाव हमें बनाना सिखाना है, तो सबकी फरमाइश पे तो आज मैंने कहा कि चलिए आपको बनाना सिखाते हैं। तो उसके लिए हमने लिया तकरीबन 1.5 किलो चिकन, ड्रम स्टिक हमने लिए, इसमें आज हम बना रहे हैं। और उसके साथ हमने ली 1 किलो गाजरें आपने इस फॉर्म में श्रेड कर लेनी है। ये तकरीबन 1 किलो गाजरें। अच्छा, उसके साथ हमने ये चीनी का हमने कैरेमल सॉस सा बनाया। इसमें आपने इस तरह करना है कि 1 टेबल स्पून चीनी लेके पैन में उसको हल्का सा ब्राउन करके उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने लेना है 1 चम्मच आपने गरम मसाला और कुटा हुआ ज़ीरा लेना है, और 2 चम्मच मैंने लिया है नमक, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। और साथ ही हमने इसमें डाला है सुल्ताना, वो भी हमने 1 कप लिया, आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल लें जितने आपको करता है। और इसके लिए हमें चाहिए सेला राइस, जो कि 5 से 6 घंटे आपको भिगो के रखना है। तो उसके बाद इसको हम बॉईल करेंगे और फिर आपको बताते हैं दम देते हुए। हमने लिए हैं 4 प्याज को इस तरह से काट के ऑयल में डाल के आपने अच्छा सा ब्राउन कर लेना है, लाइट गोल्डन कलर हो, ज़्यादा नहीं करना आपने। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया 2 चम्मच। तो इसमें फिर आपने चिकन ऐड कर लेना है और उसको 1-2 मिनट भून के पानी डाल के यखनी के लिए चढ़ा देना है। सिर्फ इसमें नमक डालना है आपने और कुछ भी नहीं। नमक डाल के और इतना पानी डालिए कि थोड़ा सा आपका चिकन हल्के से डूब जाए और अच्छा सा गल जाए। और ये चना दाल साथ ही हमने चढ़ा दी थी और वो बन चुकी है। तो काबली पुलाव के साथ ये दाल डाल के खाइए तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, तो देखिए मैंने पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाला और उसमें ये कैरेट्स डाल दी थी और साथ में 4-5 सब्ज़ इलायची डाल दी कूट के। और इसमें मैंने डाली है तकरीबन 2 टेबल स्पून शुगर, और उसको अच्छे से इसी तरह पका के इसमें देखें आपकी कैरेट अच्छे से गल जाए, ज़्यादा नहीं गलानी आपको। इतना हो जाए तो फिर इसके बाद आपने इसमें ये सुल्ताना मिक्स कर लेना है और इसको भी अच्छा सा मिक्स करके तो इसको भी पका लेना है। तो आपने चावल अच्छे से बॉईल कर लिए। इसके बाद जो हमने यखनी बनाई थी, यखनी आप इसमें डाल दें। आँच आपने तेज रखनी है। और उसके बाद आपने जो ये चीनी जो बनाई हुई थी ये आपने डाल देनी ऊपर। दिल ने दस्तरखान बिछाया, हाँ दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है। दिल ने दस्तरखान बिछाया, हाँ दिल ने दस्तरखान बिछाया। सारी देगों को आग दूं दिल की, मैं दम भी मैं दे दूं अपना।
दिल ने दस्तरखान बिछाया, हाँ दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क। So guys, once again we have a very delicious looking lunch, alhamdulillah. Starting off with the Kabuli Pulao, topped up with some carrots, there's almonds, there is sultanas, and this is chicken Kabuli Pulao, which is a bit different to the one we normally have. We have chana dal, we have salad. In the salad you can see onions, cucumbers, spinach leaves, tomatoes. Next to that we have the raita. We love raita, and with that we have fruits. Just look at the color of the plums, guys. So nice and ripened. Peaches and mangoes. So excited to try this. Let's see how this is. Always read your prayer, guys. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Grab some of that with some dal, some salad, and some raita. And Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is so delicious. Absolutely amazing. Can't go wrong, guys. I've had it so many times and it's perfect every time. So, mashallah, it's too good. So guys, some of you requested to show a house tour, so we thought we'd show you. Starting off with our bedroom, and guys, just have a look at the walk-in wardrobe. So spacious, so nice. Guys, just kidding. This is Ikea, and we thought we'd give you guys a tour of Ikea and show you guys around. That's right. And guys, as soon as you enter IKEA, वहाँ पर इतनी बड़ी एक डायरेक्टरी होती है जिसमें आपको हर चीज़ मतलब मिल जाती है, A to Z उनके पास हर चीज़ होती है, and we're so like fascinated by that because IKEA बहुत बड़ा होता है and we're like A to Z इनके पास सारी चीज़ें होती है. The only letters that was missing was the letter N, X, Y, and Z, and apart from that they had everything. Yeah, guys, this is such a massive shop. It's literally like a maze inside. You can get lost quite easily because it's not as straightforward as entry exit. So it's quite big. And guys, as we entered, we saw some study desks and things like that. Now this was like a reader's corner. Someone who loves reading books, this is very ideal for them. It's like a little precious space. That's right. And this was basically a dedication towards the founder of IKEA, जिनका नाम है Ingvar Kamprad. So basically उनको I think books बहुत ज़्यादा पसंद थी, and this was like an aesthetic corner for that. This is also an idea for someone who loves books. Yes, guys, and this was a electric table, and guys, it's so cool. This goes up and this also goes down, so for people who work in offices all day long, it's ideal for them. That's absolutely right. Apart from that, there were these lounges, sofas, and they looked absolutely amazing, and just everything about IKEA was so amazing, and different ideas. जब आप IKEA जाते हो आपके like अलग अलग आइडियाज़ दिमाग में आते हैं, और इन्होंने एक सेटिंग भी की होती है इस तरीके से बेडरूम्स की, लाउंजेस की, कि आप जब भी जाओ आपको देखकर नए आइडियाज़ आते हैं. लाइक दिस वन फॉर एग्जांपल वाज लाइक इफ़ यू हैड समथिंग दैट यू वांटेड टू हाइड फ्रॉम द लाउंज or something that looks weird with the lounge setting, so you can just put a curtain and hide it. And apart from this was pretty cool because इनके पास एक blackboard था और वो भी अलमारी के अंदर. So this is pretty cool for the kids as well, actually. That's right. And guys, I've never seen a furniture store so creative. Guys, this was so cool. So this is actually a dishwasher which looks like a cupboard from outside. So for people that want matching kitchen, like with everything matching, that is very ideal, guys. And just a little bit about IKEA, the history and some facts about IKEA. There are 2,000 new products that are launched every single year. That's right. And IKEA was actually founded in 1943 by Ingvar Kamprad. I really hope कि मैं सही से pronounce कर रही हूँ. उनकी death हुई थी 2018 में, which was actually recently.
Yeah, and every product is named after Swedish terms. Kamprad suffered from dyslexia, and so he named every product using proper names and words so that it is easy for him to identify them. That's right. और जो IKEA की स्टोर्स होती है वो बेसिकली 3 लाख फीट which means 300,000 फीट लंबी होती है, जिसका मतलब होता है कि 42 टेनिस कोर्ट्स जितनी ये बड़ी होती है, and the largest one is in Stockholm, और उसका जो टोटल एरिया है that is 594,000 स्क्वायर फीट, लिटरली एक पूरा मुल्क बन सकता है उससे। Wow, that is massive. And guys, we also saw blinds there, and this was so cool. This was an electric blind. That's right. और इसको आप अपने वाईफाई के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली आप वाईफाई के साथ कनेक्ट करके इसको अगर आप प्रेस करते हो ओपन या क्लोज, वो फिर उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। और ये जो था ये टेबल था विद द एयर प्योरीफायर। सो यहाँ पे काफ़ी लोगों को इस तरह होता है कि उनको हल्का फुल्का सा शोर पसंद होता है, सो यू कैन जस्ट टर्न इट ऑन एंड दैट्स इट, इट्स गुड टू गो। Yes. And guys, this was a lamp that we saw, which was pretty cool. Yes, so this also had a speaker, so you could just connect and you could play whatever you want. And guys, we were so fascinated by this little TV unit. You literally just press it and like पूरी की पूरी दराज बाहर निकल जाती है. That's right. और ये पैंट्री थी, तो बेसिकली आप जब भी इसका दरवाज़ा खोलते हो पैंट्री जो होती है वो स्लाइड होकर बाहर आ जाती है, और जैसे ही आप बंद करते हो स्लाइड होकर वापस अंदर चली जाती है। और आई लव दिस लिटिल लाइक कबर्ड, और इसके अंदर लाइट भी थी, एंड दिस वाज सुपर सुपर क्यूट। Very creative. IKEA's full of ideas. And guys, this was like a little laundry setup where you could see separated sections for light clothing and dark clothing. And besides that, they had more drawers as well for more laundry products like your serves and other laundry items. And that was pretty cool. This was also like a pet-friendly kitchen countertop. उसके अलावा यहाँ पर ये गेमिंग रूम था, and guys, I love gaming, so this was just a room which was like for the gamers. She loves her gaming, guys. And this lamp was pretty cool too. Very easy to use. So guys, यहाँ पर हर जगह पे एक मॉनिटर लगा होता है जिसमें जैसे कि अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, आप अपने कमरे की डायमेंशन भी सेट कर सकते हो और उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स डाल के उनसे पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पर है। And guys, they had so many soft toys as well for kids. This was a snake and some other toys they had as well. That's right. और यहाँ पे सारे kitchen utensils भी मिलते हैं, so it's not just about furniture, it's about maybe like kitchenware or other stuff as well, everything. And guys, this was pretty cool. So they had a canteen area, and for dirty dishes, people can just place them there, and this just goes into a different section, which we can't really see. And this was a coffee machine as well. So we decided to try the IKEA coffee, and it was not bad, but I think हमारे taste के लिए it was a little bit watery, but that's alright. Yeah, it was so cool to see कि IKEA has its own restaurant. We knew कि it had its own restaurant, but वहाँ पे जाके we were super fascinated by that, and we saw sour cola as well. Yeah, it's a weird drink to taste, so maybe next time we'll try it. And guys, over here they had different kind of lamps, lights, bulbs. That was so cool as well. यहाँ पे पूरा carpet वाला section था, and everything about IKEA is super super fascinating and super cool as well. And guys, they had so many candles here, different fragrances and things like that. That's right. And they also have a dedicated area towards plants. और यहाँ पर आपको indoor, outdoor दोनों plants मिलते हैं. You can also find fake plants if that's what you're interested in. Yes, guys, it's always nice to have plants in the house. It just gives it a nice fresh look. And this was more outdoor furniture. So in Australia, काफी लोगों के पास backyards होते हैं. So in the backyard, you can keep your outdoor furniture and make it look better. जब आप IKEA घूम रहे होते हो वहाँ पे अक्सर जो टीवी यूनिट्स या कोई भी चीज़ें कबर्ड्स वगैरह होती है वो सब डिस्प्ले पे लगी होती है. So if you like something, you can just check the name of that, take a picture of it, and come here and search it up. और यहाँ पर आपको बेसिकली सारी चीज़ें मिल जाती है. This was a section where it was like a second hand section for IKEA. So IKEA आपका फर्नीचर खरीदता भी है, उसको सही करके और फिर आप बेच भी सकते हो. So this was a Swedish food market which was right outside, and it looked so cool. और यहाँ पे इतनी अलग-अलग चीज़ें थी, and we were so surprised to see that, wow, they have different brands in Sweden. Yeah, there was all these different kind of drinks and snacks and things like that. Interesting to see. So I hope you guys liked IKEA. After that, we had to go to Bunnings to buy something.
after that, we had planned a dinner with our very dearest friends to La Pizza in Bankstown, and we ordered this peri peri pizza, which was very nice. Yes, and we ordered the boschiala pasta, which is nice creamy mushroom pasta, and pesto pasta. And that's also so nice, guys. It's amazing. And guys, this is our favorite Italian restaurant. It's 100% halal. Guys, I didn't really like the pesto pasta, but everyone else liked it, so I think it does the job. Apart from that, हम लोग जब घर वापस जा रहे थे, we saw this little carnival. Unfortunately, it was closed, but it looked amazing. Okay, guys, make sure to Subscribe and share this video with your loved ones. For now, Allah Hafiz. Allah Hafiz.